He is there with the Mauritian Prime Minister Navinchandra Ramgoolam. Well, that is the Mauritian Prime Minister and the Prime Minister's photo op. And the interesting thing is that this handshake is happening. This bonhomie is building in Benares itself. Of course, Varanasi is the constitution of the Prime Minister himself, and it is very significant to have the Prime Minister of Mauritius to be here in Varanasi with the Prime Minister. Of course, the Uttar Pradesh is where the Prime Minister is visiting his parliamentary constituency. This is where the bilateral dialogue is going to happen. Now, this comes in response, remember, and I believe that we have Rishabh joining us with more details on this. Very significant, Rishabh. Of course, the bilaterals are happening, but the optics are also very interesting, that the Prime Minister is hosting his counterpart from Mauritius in his own constituency this time, not in the national capital, but in Varanasi. Well, what we're given to understand that Prime Minister wants the foreign policy to be decentralized in India as well. And that's the reason that we are seeing a break from a tradition to host foreign leaders in New Delhi. Remember, there were also chatter that Fiji Prime Minister would be landing in Gwalior and would be doing a bilateral with Prime Minister in Gwalior, but things could not work back then. So now this has begun from this very visit of Navinchandra Ramgoolam, the Prime Minister of Mauritius. And remember, Mr. Ramgoolam comes from an Indian descent. His forefathers were from the state of Bihar itself. And now taking him to Varanasi, India wants to showcase that the rich culture of India. As per, sources within the government of India, Prime Minister's talk was very clear that we cannot just showcase Delhi, or for that matter, Lutyens Delhi, to the foreign leaders, and we should take them to different parts of the country, from south to north. And the beginning has started from Varanasi. This is a reciprocal visit by the Mauritian Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi just visited Mauritius earlier this year. A slew of MOUs were signed. Both the countries are culturally very entangled, and both the countries believe that the global south, which India has become a de facto spokesperson for, should rise together. Absolutely. In fact, do stay on with us. You've talked about the significance of the rising global south, but let me also go across to Ashutosh. He's joining us live from Varanasi. आशुतोष, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार जब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं मॉरिशस के, वो नॉट जस्ट स्किपिंग दिल्ली, वो वाराणसी में बायलैटरल्स हो रही है और गंगा आरती के लिए भी जाएंगे, and that is going to be very significant. Remember, the Prime Minister of Mauritius is going to attend the Ganga Aarti later on in the evening. He's going to be visiting as well the Kashi Vishwanath temple, which is going to happen tomorrow. Some reports are also saying that he may be visiting the Ram Mandir in Ayodhya. Of course, the Prime Minister Modi, is going to be leaving after this bilateral, but the Mauritius Prime Minister is going to stay on, and he will be visiting. Not just first, he'll go for the Ganga Aarti later on in the evening, after which he is expected to go across to the Kashi Vishwanath temple on Friday morning and also visit the Ram Mandir in Ayodhya. This is going to be very interesting, very significant, because it's also about the tradition that of India that we are showcasing with these kind of high-level meetings and bilaterals which are happening not just in New Delhi but also in the cultural capital, if you can call it, of India as well. One definitely is that of Varanasi, which is a very holy town. Other than being the Prime Minister's own parliamentary constituency, it is significant because of the history, the heritage, and even as we speak, you can see those three visuals when the Prime Minister returned to his constituency. He was first welcomed by Chief Minister Yogi Adityanath in the first extreme left window you can see, after which he held a mega roadshow as well. You can see how he was showered with flower petals by people from his own constituency. And even as we speak, he is holding a bilateral in Varanasi with the Mauritius Prime Minister. All of it very significant, and not just with optics, but also what is going to be the takeaway from this bilateral. But let me go to a flavor on the ground. What's happening there? Let me go across to Ashutosh. आशुतोष, सुना है कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर आज रात को गंगा आरती भी जाएंगे, काशी विश्वनाथ टेम्पल भी जाएंगे. दिस इज द वे इंडिया
इंडिया एंड नॉट जस्ट इंडिया, स्पेसिफिकली वाराणसी को शोकेस किया जा रहा है हमारे फॉरेन डेलीगेशंस के लिए। बिल्कुल, देखिए वाराणसी के लिए बेहद दिलचस्प ये तस्वीरें हैं, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में काशी में वार्ता होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी और इसमें तमाम मुद्दों पर अहम चर्चा होगी। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल ताज पहुंच चुके हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होगी और वार्ता होगी। और इसके बाद दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के जो पीएम हैं उनके सम्मान में लंच देंगे। और इसके बाद शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं वो गंगा आरती देखने के लिए निकलेंगे और इसके बाद लगभग 7:30 बजे तक वो गंगा आरती देखेंगे। और माना यह जा रहा है कि रात में ही वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करने जाएंगे और इसके बाद कल सुबह वो अयोध्या के लिए निकल जाएंगे। तो निश्चित तौर पे मॉरिशस और भारत के बीच में जो रिश्ता है उसको एक नई ऊंचाई देने के लिए, उन संबंधों को और मजबूत करने के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज वाराणसी पहुंचे हैं और उनकी मेजबानी के लिए खुद यहां के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो आप ये समझिए कि मॉरिशस भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए मॉरिशस कितना इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने देखा था कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो पिछले महीने मॉरिशस गए थे और वहां पर जो व्यापार हो या फिर जो पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से दोनों देशों के संबंधों को और एक नई ऊंचाई दी जाए उसको लेकर बातचीत हुई थी। देखिए, मॉरिशस की जो लोकेशन है वो एशिया और अफ्रीका के बीच में एक ब्रिज का काम करती है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पड़ोसी मुल्क से और बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है उसका शिकार कहीं ना कहीं भारत भी हुआ है। तो भारत ऐसी स्थिति में अपने संबंधों को और किस तरीके से बेहतर कर सकता है, खासतौर से पड़ोसी मुल्कों को लेकर, इसलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लीड करते हुए इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। And that is going to be very interesting to see that Prime Minister himself has brought in the Mauritius Prime Minister to his own constituency. मगर ये भी बताइए, आज शाम को जब गंगा आरती के लिए वो जाएंगे, क्या प्रेपरेशंस है ऑन द ग्राउंड? देखिए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जब कल वाराणसी पहुंचे थे तो वाराणसी में सड़क के दोनों किनारों पर जो स्थानीय लोग थे, जो छात्र थे, जो युवा थे, वो अपने हाथों में मॉरिशस और भारत का झंडा लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। और आज जब वो होटल ताज से निकलकर गंगा घाट पर जाएंगे तो इस दौरान भी रास्ते में कुछ उसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो नजर आएंगी। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो रविदास घाट पर जाएंगे और वहां पर क्रूज पर सवार होंगे और क्रूज के जरिए ही गंगा के घाटों का दीदार करते हुए वो दशाश्वमेध घाट पर उनका जो क्रूज है वो कुछ देर के लिए रुकेगा, जहां पर गंगा आरती हो रही है। हालांकि ये जो गंगा आरती होगी वो थोड़ी सी सांकेतिक तौर पे आरती हो रही है, क्योंकि वाराणसी में इन दिनों बाढ़ की स्थिति है, लिहाजा वाराणसी के जो सभी 84 घाट है वो पानी में डूबे हुए हैं, तो वो खूबसूरती शायद वो न देख सकें, वो उस खूबसूरती को मिस कर जाएं। बावजूद इसके जो सांकेतिक आरती है, जो माँ गंगा का जो आचमन है वो जरूर करेंगे। और यही कारण है कि वाराणसी के रविदास घाट पर भव्य स्वागत की तैयारी है और वाराणसी के जो शहर के अलग अलग जो हिस्से हैं वहां पर किस तरीके के स्वागत किया गया है इस वक्त वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये नदेसर का क्षेत्र है और यहाँ की सड़कों पर किस तरीके से जो यहाँ के मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीनचंद्र रामगुलाम, उनके जो कटआउट्स हैं बड़े बड़े वो इस वक्त वाराणसी की सड़कों पर लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं रिश्तों की एक जो नई इबारत है, जो एक नई पटकथा है, उसको लिखने की कोशिश की जा रही है इस दौरे के बहाने। Oh, very interesting. Right behind Ashutosh, we can see huge cutouts of the Mauritian Prime Minister. We'll keep coming back to you, Ashutosh. Of course, Prime Minister is currently there in Varanasi, of course, holding the bilateral. But also what's interesting is the way that India is being showcased, not just as the powerhouse of the world, but also the cultural and traditional hub. This is what many call the renaissance of India's legacy and India's culture. Well, thank you so much, Ashutosh, as well as Rishabh, for getting us all those details. We'll keep coming back to you. But for the timing, let's move on and tell you about Nepal, where we have seen trouble brewing in our own backyard. However, it is now slowly limping back to normalcy after days of political uncertainty and unrest. In a significant development, the youth-led Gen Z voices have taken a decisive step. They have chosen